Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Fundamentals of Public Administration, and the course code is MPA 406. Today we have a lecture number 15. So before we move on to our today's topic of discussion, let us have a brief reflection of what we have discussed in our previous lecture. In our previous lecture, we have talked about conflict. Now, what is conflict? What comes in your mind when we talk about conflicts? Now, when we talk about conflicts, it means that conflict is some called a disagreement, or like when you do not agree with somebody and things like that. Now, having conflict at workplace is a common thing, and according to research, there is no workplace in the world which has no conflicts, meaning that having a conflict at the workplace is a natural phenomena. It is a common phenomena, and people, when they interact, when they work with together, when they work in one organization, when they work in one department, so when they have an interaction, they have conflicts. So then we talked about why do we have conflicts in organizations with a particular reference to public sector of Pakistan. Of course, there are many reasons when we talk about, particularly about the public sector of Pakistan, there are many reasons why people have conflicts. Like for example, the basic root cause of conflict is perceptions. So no two humans in the world have the same perceptions. So people have different ideas, they have different values, they have different status, they have different mindset, things like that. So people having different backgrounds and different factors like values or traditions, cultures, and things like that. So because of these differences, when they work together, they have different opinions. Like for example, in our previous lecture, we have talked about, like for example, some people, they prefer to give only the quality of work. And of course, there are some other people who want to be like, who want to complete the task in a quickest period of time. So when these two type of persons, like one person who want to complete the task with the best quality, और दूसरी तरफ हम person की बात कर रहे हैं who want to complete the task as soon as possible. So when these two persons are working together in a team or in an organization, in a department, what happens that there is a conflict. So then we talked about different types of conflicts. Like for example, we have positive conflict and we have negative conflict. Now, how do we differentiate between these two? Now, positive conflict means that giving your positive suggestions, giving your positive ideas, giving your positive feedback. Like for example, you want to bring improvement in your product. You want to bring improvement in your services that your organization is providing. Now, in order to bring improvement in your products or services, you give a positive feedback, a positive suggestion. So that is called a positive conflict. On the other side, when we talk about the negative conflict, it means that it is like negative criticism, tanqeed, parai tanqeed, just like for example, it's like a blame game. So somebody blaming the other person, and then the other person then blame back to the first person. So this is a blame game going on, and this is called negative conflict. So then we talked about different theories of conflict. Like for example, in our previous lecture, we talked about the traditional theory of conflict and modern theory of conflict. Now, what are the basic differences between these theories? So let us discuss theory of traditional theory of conflict. Now, traditional theory of conflict says that conflict is made by troublemakers, and conflict is not good, and one should try to avoid conflict. So traditional theory of conflict try to convince us that we should avoid conflict, and people who create conflict, they are actually the troublemakers according to the traditional theory of conflict. Then we talk about the modern theory of conflict. Now, modern theory of conflict means that for example, it says that conflict is a good thing.
conflict is something which is positive. We can get the benefit out of conflicts. So there is a positive side of conflict. So the modern theory of conflict shows us the positive side of conflict, whereas the traditional theory of conflict shows us the negative side of conflict. So what do we conclude from these two theories, traditional theory and modern theory of conflict? So when we compare two of these theories, the conclusion is, of course, positive conflict is beneficial to the organization, positive conflict is beneficial to the individuals, positive conflict is beneficial to the groups or teams. So having a positive conflict is good for the health of an organization. Now, how we can promote positive conflict? This is really a very important question we need to ask here. Like, फॉर एग्जाम्पल इन ऑफिस मीटिंग्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत कम लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, पर्टिकुलरली जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो इन ऑफिस मीटिंग्स में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर 40-50 लोग बैठे हुए हैं एक ऑफिस मीटिंग के अंदर, एंड सो ओनली फ्यू पर्सन्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर आर्गुइंग एंड गिविंग देयर कमेंट्स और सजेशंस, सो थिंग्स लाइक दैट. बट most of the persons sitting in that meeting, they are not participating, they are not asking questions, they are not arguing. So what is going on? Meaning that we need to promote positive conflict. We need to motivate our people so that people should start participating. They should be asking questions, they should be arguing, and we call it a brainstorming session. So we can motivate our employees, like for example, we can give incentives to those employees who participate more. We can give incentives to those employees who is able to give wonderful feedback and things like that. So why not in public sector of Pakistan, we should try to motivate people to participate more in meetings. So there is another factor that why people do not participate in meetings, why they do not ask questions, why they do not disagree positively with others. There may be a factor of fear. Like for example, some of the employees, they might have a fear कि अगर मैंने अपने बॉस के साथ डिसएग्री किया, अगर मैंने अपने बॉस से एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैंने दिया कि बॉस का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और मैंने एक और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो ये ना हो कि मेरी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट या मेरी जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, ACR है, वो मेरा बॉस जो है वो ख़राब ना कर दे. तो इस तरह के जो फियर्स हैं उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है. बॉसेस को चाहिए कि वो अपने टीम मेंबर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को एतमाद में लें, उनको कम्युनिकेट करें कि उनका जो पॉजिटिव फीडबैक है, उनका जो पॉजिटिव डिसएग्रीमेंट है, उसको नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, एंड दिस इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. Then we talked about how to manage conflict. Of course, conflict management is really very important किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इसके लिए हमने डिफरेंट स्टेप्स आपको डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में. लाइक फॉर एग्जांपल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये देख लें कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, कि इस वक्त एट प्रेजेंट क्या हालात हैं, इस वक्त हो क्या रहा है. इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, उस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, नंबर 1. नंबर 2, गैदर और कलेक्ट इंफॉर्मेशन. तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो डिफरेंट पार्टीज हैं या डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं या टीम्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन लें कि what is their feedback, like what is the opinion of party A and what is the opinion of party B and things like that. After you collect data, then you analyze that data, and then you come up with a mutual problem. Like for example, what is the similarity between the two groups, like what is the mutual problem, दोनों ग्रुप्स को या दोनों स्टेक होल्डर्स को या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कॉमन प्रॉब्लम क्या है, उस कॉमन प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई करना है, म्यूचुअल प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और उस म्यूचुअल प्रॉब्लम को सामने रख कर देन यू एस्टेब्लिश डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. नाउ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस आप डिस्कस करेंगे. उसके लिए यू कैन हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस,
उसमें डिफरेंट जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के साथ आप मैक्सिमम अल्टरनेटिव जो हैं उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, एंड देन जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको फिर आप फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसमें सबसे बेहतर सॉल्यूशन कौन सा है, और जो टॉप मोस्ट सॉल्यूशन होगा म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद, देन यू अप्लाई दैट सॉल्यूशन। ओके, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोशिश करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की, उसको मिनिमाइज करने की, उसको रिमूव करने की, नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, डाटा गैदरिंग करेंगे, देन सिचुएशन एनालिसिस करके उसकी डाटा गैदरिंग करके डाटा का एनालिसिस करके फिर आप अपने सर्टन फाइंडिंग्स के साथ आएंगे और सॉल्यूशंस के साथ आएंगे। नाउ दिस इज अ गुड वे, बट इन केस व्हाट हैपेंस दैट इन सम केसेस you are not able to solve the problem, you are unable to manage the negative conflict. So what happens that in this case जब हालात आपके कंट्रोल में ना हो, then you need a mediator. Now mediator is a person who acts like a bridge between different groups, different stakeholders, different parties. तो जिन लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट है, उनके दरमियान एज ए ब्रिज जो पर्सन काम कर रहा होता है उसको हम कहते हैं मीडिएटर। तो मीडिएटर का काम है कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको जो कॉन्फ्लिक्ट में हैं, एक नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, तो उनको एज ए ब्रिज उनको मिला के और एक म्यूचुअल कंसेंसस के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। इन केस अगर मीडिएटर भी कामयाब नहीं होता, देन फाइनली देयर इज अ रोल ऑफ आर्बिट्रेटर। नाउ आर्बिट्रेटर से क्या मुराद है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज द आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, कि जब हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको सॉल्व करने के लिए वी नीड टू हैव ए आर्बिट्रेटर। और आर्बिट्रेटर की बात है कि आर्बिट्रेटर के पास वो तमाम अथॉरिटी होती हैं, वो पावर्स होती हैं, और वो डिसीजन लेता है किसी एक पार्टी के लिए, या कोई ऐसा डिसीजन लेता है जो दोनों पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो, या वट एवर द सिचुएशन इज अकॉर्डिंगली वो एक डिसीजन लेता है, और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो आर्बिट्रेटर के पास होती है। Okay, now we move on to today's topic of discussion, and that is organization. So before we move on to the further topics, let us see that what organizing means. Organizing means that there should be clear line of authority and all should know who reports to whom. Now जब आप organizing की बात करते हैं तो किसी भी organization के अंदर जब हम कहते हैं कि ये एक organization बहुत well organized है, इससे क्या मुराद है? It means कि एक हायरार्की सेट की गई है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन किसको रिपोर्ट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेड 10 में जो एम्प्लॉई है वो किसको रिपोर्ट करेगा, ग्रेड 17 का एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करेगा, ग्रेड 20 का एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करेगा, एंड सो ऑन। सो एक रिपोर्टिंग की एक हायरार्की है कि हु रिपोर्ट्स टू हुम। सो लेट अस अज्यूम दैट कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इस तरह की हायरार्की नहीं है कि किसने किसको रिपोर्ट करनी है, तो देन इमेजिन कि क्या होगा। डेफिनेटली कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं हो सकता। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वी मस्ट ऑर्गेनाइज आवर सिस्टम, वी मस्ट ऑर्गेनाइज आवर स्ट्रक्चर इन अ वे कि एक हायरार्की हो, एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हो, और तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टमैटिक तरीके से हो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, और हर एक को पता हो कि उसने किसको रिपोर्ट करनी है, ताकि उसमें एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर भी आ जाता है, एवेल्युएशन का फैक्टर भी आ जाता है, और डेफिनेटली उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर भी हमें नजर आता है। नाउ फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। जब हम इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि द फर्स्ट वन इज classification of activities. So first, all activities in organization must be classified. That is, activities similar in nature should be identified separately. Now हमने तमाम एक्टिविटीज़ को डिफरेंट क्लासेस में उसको आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट कैटेगरीज में उसको आइडेंटिफाई करना है कि लाइक फॉर एग्जांपल जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको अलहदा आपने करना है। लाइक फॉर एग्जांपल 10 तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो उनमें से आप देखेंगे कि जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उसको आप एक क्लास में ग्रुप बना लेंगे, और जो दूसरी सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, तो जो कॉमन या सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको आप उनका एक ग्रुप बना लेंगे। सो यू क्लासिफाइड योर डिफरेंट एक्टिविटीज़।
Then we move on to the grouping of activities to achieve objectives. Similar activities should be grouped. Now similar activities को आप ग्रुप्स में लेके आते हैं to achieve your objectives. Now तमाम जो similar activities हैं आपने उनको ग्रुप में क्यों लेके आते हैं कि ताकि आप बेस्ट एफिशिएंसी और बेस्ट इफेक्टिवनेस दे सकें, क्योंकि जब एक ग्रुप के अंदर एक ही तरह की एक्टिविटीज हो रही होंगी तो डेफिनेटली वहां पे इंप्रूवमेंट आएगी, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट आएगी, उसके अंदर बेटर ऑप्शंस होंगे, बेटर आइडियाज होंगे, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के ब्राइट चांसेस हैं. सो जब आप ग्रुप करते हैं एक्टिविटीज को और एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करते हैं तो ऑफ कोर्स द most possible result is you achieve your objectives. And then assigning a manager to each group of activities. So a manager should be assigned to each group of activities. आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप के लिए आपने एक सेपरेट मैनेजर को असाइन किया. सो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. तो जो मैनेजर आप असाइन करेंगे दैट मैनेजर शुड हैव that competence and ability to manage that group. For instance, किसी भी ग्रुप के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी की जो एक्सपर्टीज होगी जिसके पास, उसी को आप मैनेजर लगाएंगे उस ग्रुप का, ताकि वो मैनेजर उसको बेहतर तरह से सुपरवाइज कर सके, मॉनिटर कर सके, एवेलुएट कर सके. Then coordination of group of activities both horizontally and vertically. So coordination means the interrelationship among activities. तो एक coordination की यहाँ ज़रूरत है तमाम activities में. और जब हम horizontally and vertically की बात करते हैं कि vertically means your like for example आपके columns आ जाते हैं और horizontally means your रोज. तो जब आप बात करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज की बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, इट मींस दैट कि तमाम चैनल्स पे, तमाम लेवल्स पे एक कोऑर्डिनेशन की, कोऑपरेशन की यहां पे जरूरत है. नाउ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मींस अ फॉर्मलाइज्ड इंटेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स एंड पोजीशंस. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट रोल्स हैं और डिफरेंट पोजीशंस हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक मैनेजर फाइनेंस है तो मैनेजर फाइनेंस की जो पोजीशन है उसका एक रोल है कि उस मैनेजर फाइनेंस ने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है. तो हर एक पोजीशन के साथ उसका एक रोल है. मैनेजर मार्केटिंग के साथ उसका अपना एक रोल है कि मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैनेजर मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं. इसी तरह मैनेजर प्रोडक्शन है कि जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं मैनेजर प्रोडक्शन की. सो हर एक पोजीशन का अपना अपना एक रोल है. एंड देन हियर वी रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर इन विच पीपल वर्क. फॉर एग्जाम्पल स्कूल इज एन ऑर्गेनाइजेशन. तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, दैट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन. और स्कूल जो है जिसमें मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, तो ये सब लोग मिलकर जब काम कर रहे हैं तो इट मीन्स स्कूल इज एन ऑर्गेनाइजेशन. एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं इसकी. Then when we talk about organization, of course, then we talk about the organizational roles. Now, organizational roles are the part or position that a person is assigned in the organization. तो हर एक जो एम्प्लॉई काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसका एक पार्ट है, उसका एक रोल है और वो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको असाइन की जाती हैं ऑफ कोर्स जो डिसीजन मेकर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी तरफ से. फॉर एग्जांपल द रोल ऑफ मैनेजर सेल्स और योर रोल एज ए स्टूडेंट. तो मैनेजर सेल्स का क्या रोल है कि अपनी सेल्स को डेफिनेटली उसको वॉच करना, उसको एनालाइज करना, डाटा कलेक्शन करना, उसको फोरकास्टिंग करना, उसको प्रिडिक्ट करना कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में क्या फोरकास्टिंग होगी सेल्स की. पास्ट डाटा जो है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रेजेंट डाटा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या हैं. तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं, इनको मिला के इसको एनालिसिस करना, दैट इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर सेल्स. एंड देन योर रोल एज ए स्टूडेंट. ऑफ कोर्स एज ए स्टूडेंट आपका क्या रोल है इस वक्त. एज ए स्टूडेंट आपका सबसे बुनियादी जो रोल है दैट इज यू शुड ओनली फोकस ऑन योर स्टडीज. बिकॉज यहाँ पे ये चीज मैं यू जरूर ऐड करना चाहूंगा कि दिस इज योर बेस्ट टाइम. ये बेस्ट टाइम दोबारा जिंदगी में आना बहुत मुश्किल है.
बिकॉज जब हम बात करते हैं कि जो वक्त की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी सी कोटेशन याद आ रही है कि लाइक द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज, द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज। बुरी खबर ये है कि वक्त पर लगा के उड़ जाता है। क्या आप वक्त को रोक सकते हैं? क्या आप वक्त को पॉज कर सकते हैं? क्या आप वक्त को रिवाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो ना आप वक्त को रोक सकते हैं, ना आप उसको स्लो कर सकते हैं, ना आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं। तो मीनिंग कि वक्त पर लगा के उड़ जाता है और पर लगा के और इतनी तेजी से गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता। अगर आप अपने बचपन को देखें, अपने पास्ट को देखें, तो आपको लगता है कि अभी कल की बात है। तो दिस इज द बैड न्यूज, वक्त फ्लाइज। व्हाट इज द गुड न्यूज? The good news is you are the pilot, meaning that if you are a good pilot, if you know how to do the well time management, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, तो जब हम एज ए स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो दिस इज योर बेस्ट टाइम। ना अपने टाइम को मैक्सिमम आपने अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना है। आपने अपने टाइम को अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उस पर फोकस करना है। आपने अपनी रिसर्च पे फोकस करना है। आपने अपनी तमाम जो फ्यूचर आपकी जो प्लान्स हैं उसकी तरफ फोकस करना है और थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करके आपने चलना है। तो जो स्टूडेंट्स थ्योरी और प्रैक्टिकल को साथ लेके चलते हैं, जो कुछ आप अपनी बुक्स में पढ़ रहे हैं, जो लेक्चर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी टॉपिक को जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करते हैं या इर्द गिर्द जहाँ पे जिन ऑर्गेनाइजेशंस को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या आपके एल्डर्स जहाँ जॉब कर रहे हैं या अगर आप खुद जॉब कर रहे हैं, तो आप इन थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ जब आप रिलेट करते हैं, सो इन दिस वे आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ता, आपको याद नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक पर्सन को प्रैक्टिकली काम करते हुए देखते हैं, तो जब आपसे पूछा जाए कि वो पर्सन क्या काम करता है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वो पर्सन क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्योंकि आपने उसको ऑब्जर्व किया हुआ है, आपने उसको देखा हुआ है काम करते हुए। लेकिन उसी पर्सन के बारे में आपको एक चैप्टर दे दिया जाए कि ओके फाइन, ये चैप्टर आप पढ़ लें और फिर आप बताएं कि ये पर्सन क्या करता है, तो थोड़ी सी आपको ट्रबल होती है और थोड़ा सा आप फील करते हैं कि थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, मैं इसको अंडरस्टैंड कर लूँ, मैं थोड़ा सा इसको और पढ़ लूँ। तो दिस इज द डिफरेंस कि अगर आप सिर्फ थ्योरी पे रहेंगे तो आपको काफ़ी ट्रबल हो सकती है। तो मेरी यहाँ पे आप सबको ये एडवाइस है कि जो थ्योरी है उसको आप प्रैक्टिकल के साथ रिलेट को करके चलें। जितने कॉन्सेप्ट, जितने पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन लेक्चर्स में, इन तमाम थ्योरी जो है, तमाम जो लेक्चर के पॉइंट्स हैं, इनको आप अपनी प्रैक्टिकल की ज़िंदगी के साथ जब आप रिलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ जाएगा और फिर याद रखने की बजाय आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी। और अंडरस्टैंडिंग के बाद डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल नहीं है कि उसको एग्जाम में आपने लिखना है या जॉब इंटरव्यू में आपने बताना है या एक ऑफिस मीटिंग के अंदर अगर आपने डिस्कस करना है किसी पॉइंट को, तो फिर आपके लिए कभी कोई मसला नहीं होगा। सो दिस व्हाट आई कैन एडवाइस टू यू एट दिस टाइम। Now we move forward on organizational roles, and that is people will cooperate effectively in organizations if they know the part they have to play in the organizations. That is, if they know their roles in the organization. Now this is really very important. पब्लिक सेक्टर के अंदर दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि रोल क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि हर पर्सन जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है उसका एग्जैक्ट रोल क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी पोजीशन है, उस पोजीशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उसने रोल प्ले करना है। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका क्या रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉई, तो आप ये मुझे बताएं कि आप परफॉर्म कैसे करेंगे। पहले शख्स ने पूछा कि ये रोड कहाँ को जाती है, दूसरे ने उसका जवाब दिया कि आपने कहाँ जाना है। पहले ने कहा कि मुझे तो नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, तो दूसरे ने कहा फिर आप किसी भी रोड पे चले जाएं, ये आपको वहीं ले जाएगी जहां आपने जाना है। तो इस मिसाल से हमने क्या सीखा? इस मिसाल से हमने ये सीखा कि अगर आपको पता ही नहीं है
कि आपकी ऑफिस के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ यू डू नॉट नो what is your major responsibility or what is your role in this organization, then how you are going to perform, how you are going to perform efficiently and effectively. So this is really very important. You should know the direction, you should know the job responsibilities, you should know your role. So this is really very important. और जितनी ज़्यादा आपकी role clarification होगी, the more you know about your job responsibilities, the better you are in your performance. Now, these following are the requirements of organizational goals. जब इस slide पे आप देख रहे हैं, the first thing is clear objectives. People must know the objectives that they have to achieve clearly. Student must know their objectives. So this is really very important. We should have a crystal clear understanding regarding our objectives. कि what is the real objective as a student, अगर आपका क्या objective है. Like for example, आपने admission लिया, you are enrolled in this program. So what is your academic objective? What is your career objective? आप अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं? This is really very important. So हम जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं एज ए बिजनेस पर्सन, एज ए पब्लिक सर्वेंट और एज ए स्टूडेंट, तो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी का अगर जब तक हमें क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो डेफिनेटली हम अपनी बेस्ट एफर्ट्स जो हैं उसको पुट इन नहीं कर सकते. सो हैविंग अ क्लियर ऑब्जेक्टिव इन आवर माइंड कैन improve our performance, particularly in the public sector of Pakistan. And then clear idea of duties or activities. People must know their duties and activities that they must perform. For example, student duties are to study, be disciplined. Now जब हम देखते हैं कि तमाम जो एम्प्लॉइज़ पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जब हम पब्लिक सेक्टर पे आज फोकस कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर में जितने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, दे मस्ट नो अबाउट देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो उन्होंने परफॉर्म करनी है. फॉर इंस्टेंस, एज ए स्टूडेंट आपकी जो ड्यूटी है कि यू मस्ट स्टडी एंड यू मस्ट बी डिसिप्लिन्ड. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. डिसिप्लिन के बगैर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते. नाउ दिस इज़ अ फैक्ट. सो आपको बड़ा सिस्टमैटिक होना चाहिए, आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए. यू शुड नो कि आपने किस वक्त पढ़ना है, आपने किस वक्त रेस्ट करना है, आपने किस वक्त अपने सोशल सर्कल को टाइम देना है, आपने अपनी फैमिली को किस वक्त टाइम देना है. सो यू शुड प्लान ईच एंड एवरीथिंग. तो जब आप सिस्टमैटिक वे से जब आप चलेंगे, जब आप एक डिसिप्लिन वे से चलेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्टडी करना मुश्किल नहीं है, आपके लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना मुश्किल नहीं है, आपके लिए अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना मुश्किल नहीं है अगर आप डिसिप्लिन तरह से अगर आप मूव करते हैं, अगर सिस्टमैटिक तरीके से आप मूव करते हैं. और अगर आप अनप्लान्ड और अनसिस्टमैटिक और विदाउट डिसिप्लिन अगर आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन नॉट perform our job responsibilities, our duties or activities in a better manner. Clear area of authority. In organizations, people must know the extent of authority that they have. Again, a very important factor that जैसे हमने कहा कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए एज एन एम्प्लॉई, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको अपनी अथॉरिटी का पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी अथॉरिटी है, आप कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जितना बेहतर आपको पता होगा कि आपके पास कितनी अथॉरिटी है. अगर आपको यही नहीं पता कि आपके पास किस किस चीज़ की अथॉरिटी है, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप किस किस चीज़ के ऑथराइज हैं, अगर आपको यही आइडिया नहीं है तो डेफिनेटली आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बहुत सारे रिसोर्सेज को आप अंडर यूटिलाइज कर जाएंगे. तो जब आपको पता होगा कि आपके पास एक खास हद तक अथॉरिटी है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. Now we move on to the concept of organizations. So when we talk about organization, what are the different types of organizations? So in this slide you see that there are different types of organizations, and organizations can be categorized into following types. The first one is the formal organization, and then we have the informal organization. So what are the differences? Let's have a look. So when we talk about formal organizations, it means the intentional structure of roles in a formally organized
organization or enterprise. So this is something which is intentional. Like for example, you have already planned it, and it is documented, it is written in a document, and it is as per plans. So it is an intentional structure कि एक organization के अंदर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक पोजीशन लिखी है कि वी हैव ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेफिनेटली एक रोल्स हैं, उनको डिफाइन किया गया. द स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड बाय पीपल टू अचीव सर्टेन डिफाइंड गोल्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट किए जाते हैं? द रीजन इज टू अचीव सर्टेन डिफाइंड गोल्स. सो एक बेटर स्ट्रक्चर आपको हेल्प आउट करता है in order to achieve your organizational goals and individual goals. तो this is really very important. और इस वक्त जब हम modern organizations की बात करते हैं तो modern organizations or the most developed organizations, they believe on alignment of goals. Like for example, employees who are working in the organizations, they have their individual goals, and then the organizations, they have from organization point of view, there are organizational goals. So the more advanced level organizations or the most developed organizations, what they have done is they try to create an alignment between the individual goals and the organizational goals. तो जब आपकी alignment हो जाती है तो of course both parties are satisfied. Individuals or the groups are satisfied. On the other side, organization is satisfied. So when all persons who are working in the organizations, they have a high satisfaction level, and that the high satisfaction level converts into loyalty. And when your employees are loyal, that's it. Now they will do wonders for you. They will do anything for you as per rules and regulations. So this is really very important कि हमारा जो structure है उसके जो different roles हैं वो clear define हो, और उसमें understanding जो है employees की और जो उस organization के roles जो उन्होंने perform करने हैं उन roles के बारे में एक understanding बहुत clear हो employees की. And then the formal organizations could be hospitals, schools, water and power development authority, etc. These are some of the examples of formal organizations. The next type is informal organization. Now, a network of personal and social relations not established or required by the formal organization but arising spontaneously as people associate with each other is called informal organization. तो जैसे कि हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पहले बात की कि इट इज़ डॉक्यूमेंटेड, इट इज़ समथिंग विच इज़ इंटेंशनल, और ये आपके स्ट्रक्चर के अंदर इस रोल को डिफाइन किया गया है. लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह का नहीं है. इट इज़ अ इनफॉर्मल सेटअप, और एक सोशल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए इसको क्रिएट किया गया. एंड देन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रेंडशिप within the organization amongst people working at various levels. Now this is a fine example of informal organization कि जब organization में जो लोग काम कर रहे हैं, department में काम कर रहे हैं या overall organization में काम कर रहे हैं, so they create like for example they establish relations, and then with the passage of time those relations are more strengthened. So जो वो relation establish होते हैं, वो strengthen होते हैं, तो वो उतने ही ज़्यादा definitely उनके दरमियान cooperation and coordination level increase होता है. So this is a good example कि when we have those formal and informal relations in the office, the result is enhanced performance. Now we talk about organizational levels and span of management. Organizational levels exist because there is a limit to the number of persons a manager can supervise effectively, even though this limit varies depending on situations. So now this is a very interesting thing I'm going to discuss here now, that किसी भी manager के लिए एक team में कितने लोग हैं उनको मैनेज करना डिपेंड करता है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक टीम में अगर 50 लोग हैं तो मैनेजर उनको किस तरह सुपरवाइज करेगा, और उसी टीम में अगर 20 लोग हैं तो किस तरह सुपरवाइज करेगा, और अगर उसी टीम में
या उसी डिपार्टमेंट में 500 लोग हैं तो उनको किस तरह सुपरवाइज करेगा। तो डेफिनेटली एक लिमिट होती है हर मैनेजर की कि वो कितने लोगों को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। मतलब इफेक्टिवली से मुराद ये है कि जिनसे वो अपने टारगेट्स को अचीव करवा सकता है, वो अपने आउटपुट दे सकता है जो कि डिजायर्ड गोल्स एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। बट अगेन दिस वेरीज, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्पैन की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स द नंबर ऑफ पीपल अ मैनेजर कैन supervise here, or it is generally believed that a number of people that a manager can effectively supervise are between 7 and 10, but this is not a principle. तो एक जनरली एक जो फाइंडिंग है कि 7 to 10 persons को ideally one manager can supervise effectively, but of course this is not a principle. ये कोई एक रूल ऑफ थंब नहीं है कि 7 to 10 पर्सन्स को ही इफेक्टिवली सुपरवाइज किया जा सकता है। ये 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं और 7 से कम भी हो सकते हैं। Now talking about the principle of span of control, there is a limit to the number of subordinates a manager can effectively supervise, but the exact number will depend on the impact of the following. And now we are going to discuss different factors determining an effective span, and the first factor is training of subordinates. The more trained and experienced employees, the less supervision they require, and therefore the manager can supervise more employees. So now you see that it really depends कि आपके subordinates जो हैं उनका background क्या है, वो कितने एक्सपीरियंस हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी कितनी क्वालिफिकेशन है, उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं, उनकी क्या क्या कॉम्पिटेंसी हैं, क्या उन्होंने सिमिलर एक्टिविटीज़ को पहले परफॉर्म किया है, नहीं किया है, थिंग्स लाइक दैट। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तो आपके सबऑर्डिनेट्स की ऑलरेडी वो ट्रेंड हैं, ऑलरेडी उनको काम आता है और उनका एक बैकग्राउंड है उस एक्टिविटी के अंदर, तो डेफिनेटली वहाँ पे सुपरविजन की कम ज़रूरत होगी। लेकिन अगर उनकी वेल ट्रेंड नहीं है वो एम्प्लॉयज़, उनको काम नहीं आता, उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। The next is the clear delegation of authority. So delegation of authority means to give part of authority to subordinate. Now this is really very important to understand जब हम public sector की बात करते हैं कि delegation of authority is really very important because the more you delegate, it means that the more you trust your employees and the better performance you may expect from your subordinates. Thus, if managers can delegate authority clear to each subordinate being supervised, more employees can be brought under supervision. Again, आप जैसे हमने पहले बात की कि 7 to 10 मेंबर्स जो हैं, आइडियल एक हमने बात की कि जो ऑन एवरेज है कि 7 to 10 पर्सन्स को मैनेजर सुपरवाइज कर सकता है, लेकिन उन्हीं 7 to 10 पर्सन्स को लेट अस सपोज कि 10 पर्सन्स को मैनेजर सुपरवाइज कर सकता है इफेक्टिवली। उन 10 पर्सन्स में से अगर मैनेजर 2 या 3 लोगों को या 1 पर्सन को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करता है तो डेफिनेटली इस 10 नंबर को आप इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जिसको आप अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे दैट पर्सन में आल्सो सुपरवाइज अदर्स। सो इट मीन्स कि आप 10 को 15 पे 20 पे लेके जा सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ प्लान्स. When the plans are clearly understood by the employees, the manager can supervise more people. Again, a very important point here that जब तक plans की clarification नहीं होती, understanding नहीं होती, supervision is difficult. So, better the understanding of plans, the better you are able to supervise. So, जितने ज़्यादा आपकी plan की clarification होगी, understanding होगी employees को, उतना ही आसान होगा आपको सुपरवाइज करना, और मीनिंग दैट इतने ज्यादा नंबर को वन मैनेजर कैन सुपरवाइज। नाउ वी मूव ऑन टू डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंट इज वन वे ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज इज एस्टेब्लिशिंग डिपार्टमेंट. Now, a department is a distinct area, division or branch of organization over which manager has authority for performance of specified activities. तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन की. इसमें हम बात करते हैं कि we do that grouping activities and people into departments make it possible to expand organizations to an indefinite degree. और इसके अंदर हम different types को डिस्कस करेंगे and these are the types.
So these types are classified according to, like for example, by number, by time, by function, by geography, by production, and by customer. So let's discuss these types of departmentalization one by one. The first one is that departmentalization by simple numbers. Departmentalization by number is done by putting people in group who are to perform the same duties. So they are placed under supervision of a manager or supervisors. For example is armies in old times, unskilled labor in construction. So these are the fine examples of the departmentalization by simple numbers. Then we talk of departmentalization by time. Departmentalization by time is done at operational or lower levels of organizations where activities are grouped together on the basis of time. Examples are people working in shifts in steel company, hospitals, etc. तो इसमें आप टाइम फैक्टर को लेके आते हैं कि लाइक कितनी शिफ्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं टाइम के हिसाब से. लाइक फॉर एग्जांपल 24 आवर में वन में हैव 3 शिफ्ट्स, सो 8 आवर्स की 3 शिफ्ट्स हैं, तो हर शिफ्ट के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं. एंड इसी तरह हॉस्पिटल्स की जब आप बात करते हैं तो मुख्तलिफ शिफ्ट्स में टाइम के हिसाब से आप उसको डिवाइड करते हैं कि एक दिन में 24 आवर में कितनी शिफ्ट्स हैं और हर शिफ्ट में कितने लोग हैं जो कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं. देन वी टॉक ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइम की एडवांटेजेस को हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हेन वी डू दैट डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइम. So it has 2 major advantages, and these are the usual timings of offices are 8 hours, but if departmentalization is to be done beyond 8 hours, second shift or round the clock service can be provided. So now you see that कि जब आप टाइम के हिसाब से डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं तो आप 8 आवर्स से ज़्यादा जा सकते हैं, आप उसको 16 आवर्स पे लेके जा सकते हैं, आप उसको 24 आवर्स पे लेके जा सकते हैं अपनी वर्किंग को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, या राउंड द क्लॉक कि आपका क्लोजिंग टाइम है ही नहीं. सो पूरा साल एवरी डे यू आर ओपन, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू डू दैट डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइम. Equipment can be used more often in shifts. Tools, equipment and physical facilities can be used to full capacity. Now underutilize हो जाते हैं equipment और facility जब आप उसको 8 घंटे या 12 घंटे यूज करने के बाद उसको छोड़ देते हैं. तो like for example एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मॉर्निंग में काम हो रहा है 9 to 5, तो शाम 5 बजे के बाद से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 बजे तक आप ये सोचें कि उसका जो डिफरेंट इक्विपमेंट है या डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं वो फारिग हैं, उनको यूज़ नहीं किया जा रहा, वो अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं लिया जा रहा, वो जो स्पेस है उस ऑर्गेनाइजेशन की उसका कोई फ़ायदा नहीं लिया जा रहा. तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन तमाम अपनी फैसिलिटीज़ को, तमाम इक्विपमेंट को, तमाम टूल्स को हम बेहतर तरह से यूज़ करें, फुल कैपेसिटी को यूज़ करें. दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब राउंड द क्लॉक हम सर्विस दें, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ वी डू दैट डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइम. So of course there are many advantages of departmentalization of by time, but there are some disadvantages as well. For instance, lack of supervision, people working in shifts may not be supervised. Now this is a big issue कि जो लोग shifts में काम कर रहे हैं, for example जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लेट नाइट्स में काम कर रहे हैं, उनकी सुपरविजन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि सुपरवाइजर्स जो हैं नॉर्मली दे कम इन मॉर्निंग्स और ड्यूरिंग डे लाइट और ड्यूरिंग डे टाइम. तो रात में लाइक आधी रात के बाद जो लोग जॉब कर रहे हैं जिनकी वो शिफ्ट है, तो वहाँ पे एक इंस्पेक्शन है, जो वैल्यूएशन है, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है. Increase of overtime rates. There may be increase in expenditure due to payment to workers in shift. तो जब आप shifts के अंदर काम करेंगे तो definitely जब आप overtime claim कर लेते हैं तो overtime के लिए आपको पे करना पड़ेगा. जब आप पे करेंगे तो आपकी total जो cost है that will increase. Okay, now let us discuss some of the advantages of departmentalization by function. Now it is
logical reflection of functions. This is more common and logical way of grouping activities. तो this is really very important कि जब आप activities को group करते हैं, like for example जो आपकी similar activities हैं, आप उसको एक group में कर लेते हैं और आपकी जो different activities हैं उनकी, so the major factor is जो parameter है कि जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उसको आप उनकी सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुपिंग करते हैं, और डेफिनेटली जब आप ग्रुपिंग करते हैं तो उसको बेहतर तरीके से हम एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. Maintains power of major functions. Certain functions in organizations are more important as the main or core area. For example, in universities the academic department will be major functions. So this is really very important कि जो आपकी core activities हैं या जो आपके major functions हैं उसके ऊपर आपने focus करना है, और आपने जो major power है आपने major functions को देनी है. जब आप universities की बात करते हैं तो जो academics हैं, so academic departments they have the major function in any university. So this is really very important कि आप अगर आपकी एक फैक्ट्री है या आपकी यूनिवर्सिटी है या आपका कोई बैंक है, तो हर एक के मेजर फंक्शंस हैं, उसके कोर फंक्शंस हैं. उन कोर फंक्शंस को आपने मेजर फोकस देना है, और मेजर फोकस देके जब आप आगे चलेंगे तो डेफिनेटली दैट विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस. Another advantage of departmentalization by function is it simplifies training. Since people are grouped according to functional departmentalization, it becomes easier to provide training to employees in a particular functional area wise. कि आप अगर एक ग्रुप के अंदर आपको शामिल किया जाता है और उस ग्रुप के सिमिलर फंक्शंस हैं, तो एक सेम ट्रेनिंग उस ग्रुप को दी जा सकती है क्योंकि उसके अंदर एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं. तो सिमिलर फंक्शन के ग्रुप को सेम ट्रेनिंग देना इज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू एक हेट्रोजीनियस ग्रुप को जिसमें डिफरेंट तरह के लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देना. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय फंक्शन, तो दिस इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ दैट. एंड देन टाइट कंट्रोल ऑन द टॉप. Each department head can exercise control over its own functional area. Now this is really very important कि head जो है वो हम देखते हैं कि वो जो कंट्रोल है अपने फंक्शनल एरिया में वहां पे उसका इंप्रूव होता है when we do that departmentalization by function. So we have discussed advantages of departmentalization by function. So let's have a brief look at some disadvantages of departmentalization by function. And the first one is it reduces coordination among functions. Since employees work in respective department, therefore coordination amongst various department is reduced. तो हर employee चूँकि अपने respective department में काम करेगा, तो different department के साथ जो उनकी coordination है वो definitely उसके reduce होने के chances हैं. Slow adaptation to changing environment. When people work for long time in a department, they become used to with the working and their styles become rigid. For instance, a police officer style of working would be different from that of a teacher. Therefore, they are slow to changing environment. तो हर person एक अगर अपने department के अंदर काम करेगा, अपने सिमिलर फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब काम करेगा, तो डेफिनेटली उसकी एक एडाप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि आप यूज टू हो जाते हैं अपनी हैबिट के. यू कीप ऑन रिपीटिंग योर एक्टिविटीज जब आप करते हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर इन द लॉन्ग रन क्या होता है कि आपकी एडाप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है. Limits development of managers. Development of managers is limited to a particular function only. और जब आप functions के हिसाब से departmentalization करेंगे, तो definitely हर एक particular function के हिसाब से, like for example एक function के हिसाब से आपने एक departmentalization की, उसका एक manager है और उस manager की जो competence है वो increase होगी इस पर्टिकुलर फंक्शन के हिसाब से, ना कि वो डिफरेंट फंक्शंस का एक्सपर्ट होगा, बल्कि वो सिर्फ एक फंक्शन का एक्सपर्ट होगा जिसको वो सुपरवाइज कर रहा है. नाउ वी मूव ऑन टू द डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय ज्योग्राफी.
Now, activities of an organization in a given area or territory are grouped and assigned to a manager. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको किसी टेरिटरी या एक गिवन एरिया तक आप उसको ग्रुप कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस एरिया में सर्व कर सकती है, बी ऑर्गेनाइजेशन इस एरिया में सर्व कर सकती है, थिंग्स लाइक दैट. And then example is electricity and gas is supplied by regional organizations such as Local Electricity Supply Corporation, Sui Northern Gas Company and Sui Southern Gas Company in Pakistan. तो हर एक को एक जोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं. तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारों को सर्व कर रही है, बल्कि डिफरेंट टेरिटरीज और डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक को जो है एक्टिविटीज असाइन की गई हैं. Now let us discuss some of the major advantages of departmentalization on the basis of geography. So emphasis on local market. The local markets can gain benefit as service is provided according to geography. It helps develop that market. तो अगर आप एक लोकेलिटी के अंदर, एक जोग्राफी के अंदर, एक एरिया के अंदर जब आप वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट हेल्प्स टू ग्रो द मार्केट. तो मार्केट को बहुत बेनिफिट होता है, वहाँ के बायर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है. इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन. So coordination within the geographical unit is better because all functional departments operate at the geographic region. Now जब हम geographic की बात करते हैं, advantages की बात करते हैं departmentalization में, very important factor is here is face-to-face communication. There is better communication between the service provider and service receiver. जब आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी, जब आप एक अपनी खास लोकेशन में, एक टेरिटरी में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो सेंडर रिसीवर है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस रिसीवर है, उन दोनों की क्लोज इंटरेक्शन होगी, उनकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी. एंड ऑफ कोर्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है रिमूव हो जाती हैं इमीडिएटली. So this is a wonderful advantage of on the basis of geography when we talk about departmentalization in Pakistan. Now let us discuss some of the disadvantages of departmentalization by the geography. Now हमने काफ़ी सारे advantages की बात की, इसके कुछ disadvantages भी हैं. For example, problems of control. As the functions are dispersed, therefore control cannot be exercised effectively. आप control को effectively exercise नहीं कर सकते क्योंकि आपकी locations और territories जो हैं वो बहुत ज़्यादा scattered हैं, बहुत फैली हुई हैं. It requires more human capital. From the above, it is deducted that more people are required. Of course, you need a big number. आप जितनी ज़्यादा बड़ी टेरिटरी में परफॉर्म कर रहे हैं, आप जितनी बड़ी लोकेशन में काम कर रहे हैं या पाकिस्तान में डिफरेंट लोकेशंस में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू हायर मोर पर्सन्स. और जब आप ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. Makes maintenance more difficult. Maintenance of service become difficult. So of course जो आप services provide कर रहे हैं वहाँ पे maintenance जो है वो difficult हो जाएगी because बहुत दूर दूर तक आपकी टेरिटरी आपकी फैल गई है. आपकी different जो activities हैं वो बहुत ज़्यादा broad हो गया उसका जो आपका जो working area है. तो definitely जो maintenance अगर for instance आप services दे रहे हैं तो उसकी maintenance जो है that becomes a big challenge. Now we move on towards customer departmentalization, a very important area, because we always say that customer is the king, customer is the boss, customer is always right, things like that. So it is grouping of activities so that these reflect primary interest of the customers in a variety of organizations. So customer departmentalization is usually found in banking sector, but there could be other organizations that may have customer departmentalization. So of course customer departmentalization के advantages बहुत ज़्यादा हैं. Banking sector में बहुत ज़्यादा हमें customer focus strategies नज़र आती हैं. We talk about customer relationship management and things like that. So what are the possible advantages of customer departmentalization? Let's have a look at it. So customer departmentalization encourages concentration on customer needs. So this is really very important. If we want to, improve the performance of our organization, customer
satisfaction is really very important. Okay, you need to focus only on the customer needs. So identifying the customer's needs and then encouraging your concentration on customer need, this is really very important. If you do that, customer departmentalization. The other factor here is the focus is on customer satisfaction. So how we can ensure customer satisfaction? Like for instance, these days customers, they are highly aware. Like for example, with the help of print and electronic media, TV, newspaper, magazines, internet and things like that. So information resources are easily accessible. So customers, they have mobile phones, and with the help of mobile phones, they can know the price and features and quality factors of all the products and services available throughout the world. So this is really very important to understand the real needs of your customer and then try to satisfy those needs and wants better than your competitors. So this is the only way to get the maximum customer satisfaction. Then we talk about the staff develops expertise in customer area. Of course, जब आप customer departmentalization कर रहे हैं तो आपकी staff development expertise होती है in customer area according to customer needs and wants. And then we talk of departments by product. So grouping of activities on the basis of the products or the product lines of an organization is known as departmentalization by production or product. So sometimes organizations may be producing more than one product or services. For example, a firm may be producing soaps, detergents, toothpaste, etc. And then so for each product it would have separate department. So now you see that कि आपकी एक product है, product line है, आप एक for example आप soaps भी produce कर रहे हैं, आप detergents भी produce कर रहे हैं, आप toothpaste भी produce कर रहे हैं. So for each of these products you will have a different separate department. So you cannot have one department that manages all these products lines. So this is really very important that you need to have different departments for managing these products. So in this way you can of course improve your performance and improve your quality of your product. Now we move on to another concept, and that is line and staff concept. So what are the differences between these two? Let's have a look at it. Line concept functions की जब हम बात करते हैं are those that have direct impact on the accomplishment of the objectives of an organization. For example, police person controlling the mob. तो एक बहुत सा बड़ा हजूम है और पुलिस पर्सन जो है उसको वहाँ कंट्रोल कर रहा है. Whereas when we talk about the staff concept, staff functions are those that help the line persons work most effectively in accomplishing the objectives. For example, a person managing the budget of the organization is a fine example of staff concept. Now we talk about the art of delegation. So effective delegation does not occur in certain cases because managers are unwilling or unable to apply the principles of delegation. So this is really very important कि delegation के लिए सबसे पहले तो आपकी willingness चाहिए और दूसरा आपको आना चाहिए कि how to delegate. This is really very important. So some of the managers, they do not delegate because they are unwilling. वो नहीं चाहते कि उनकी जो decision making authority है वो किसी और के हाथ में हो या partially वो किसी और के हाथ में हो, या sometimes they want to delegate but they don't know how. So much of the reason not to delegate is personal attitude towards delegation, जिसको अभी हम discuss करेंगे. The first is receptiveness. It is the willingness of manager to give subordinates chance to make decision. तो यहाँ पे जो मैनेजर की एक willingness हमें नजर आ रही है कि वो अपने subordinates को एक मौका दे रहा है, एक चांस दे रहा है कि वो decision making करें. So this is really very important. Then we talk of willingness to let go. So those managers who have risen up in position do not want to part with the decision that made at lower level. Then we continue our discussion on the art of delegation. Willingness to let others make mistakes. Although no responsible manager would sit idle and watch the subordinates make mistakes, but if the cost of mistake is not high, it should be considered as investment in personal development. Now this is a very interesting finding when we talk about the art of delegation.
मैनेजर्स दे आर विलिंग कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो मिस्टेक्स करें। मैनेजर उनको डेलीगेट करता है, उनको अलाउ करता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, बट उसको ये भी नजर आ रहा है कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल ये करने की जरूरत है मैनेजर को कि अगर तो वो मिस्टेक्स जो हैं वो माइनर किस्म की हैं, इट्स ओके, लेकिन अगर उनकी मेजर मिस्टेक्स हैं या जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है तो डेफिनेटली मैनेजर नीड्स टू कम इन अगेन और वो डेलीगेशन को जो है वो मिनिमाइज करके अपने हाथ में ले लें। बट हेयर माइनर मिस्टेक्स जो हैं जिसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है उसको मैनेजर जो है वो इनकरेज करता है और उसको इस सेंस में लेता है कि दिस इज कॉल्ड पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज विद द हेल्प ऑफ delegation. Then willingness to trust subordinates. Superiors should trust subordinates that they can make decisions. Now this is really very important कि एम्प्लॉइज का ट्रस्ट गेन करने के लिए समटाइम मैनेजर्स क्या करते हैं कि उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे देते हैं ताकि एक तो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और दूसरा उनका आपस में ट्रस्ट जो है वो लेवल जो है वो इंक्रीज हो बिटवीन द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट। Now we move on to functional authority. Now it says that it is the right thing that is delegated to an individual or a department to control specified processes, practices, policies or other matters. So when we talk of centralization, there are different kinds of centralization. जब हम बात करते हैं centralization की, there is centralization of performance, departmental centralization, and of course centralization as an aspect of management. So let's have a look of it one by one. Okay, now let us discuss that what we have learned in our today's lecture. So in our today's lecture we have talked about organization, we have talked about efficiency and effectiveness, we have talked about how with the help of effective organization हम अपनी organization के objectives कैसे achieve कर सकते हैं, goals कैसे achieve कर सकते हैं, employees goals and objectives को कैसे achieve किया जा सकता है। आज के lecture में हमने discuss किया कि there are different ways, with the help of different ways हम किस तरह से अपनी organization की activities को different classes में कैसे ग्रुप कर सकते हैं, तमाम एक्टिविटीज़ को किस तरह ग्रुपिंग करके लाइक एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो सिमिलर कॉमन एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रुपिंग करके सेपरेटली उनसे काम लिया जा सकता है और हर एक ग्रुप के ऊपर वी कैन अपॉइंट अ मैनेजर जो कि उस एरिया का एक्सपर्टीज़ जिसके पास हो और वो अपनी एक्सपर्टीज़ की मदद से उन एक्टिविटीज़ को मज़ीद फर्दर इन्हांस कर सके, मज़ीद फर्दर इन्हांस करने के साथ साथ उसको मज़ीद उसको एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की तरफ लेके जाए। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट जब हम ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो आई बिलीव दैट कि आज के लेक्चर से आपने काफ़ी लर्न किया होगा। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर काइंड अटेंशन। खुदा हाफिज़।